guys, it's me Prey and today's word of the day is assembly. Assembly. It's a noun and it has two meanings. First one is a group of people, especially one gathered together regularly for a particular purpose. Remember those school assemblies? Yeah, that's an assembly, right? People are gathered for a particular purpose, that is to torture students. Yeah, that was a good purpose. Anyways, next meaning is the process of putting together parts of a machine or structure. In huge factories and stuff, there's this process called assembly, in which people put together parts or components of things to create a whole thing, right? Such as if we take toothpaste tube, one person might just take the tube, seal it, the other might fill it with toothpaste, and the next one might screw the cap on it, and then the next one might put it in the packaging. This is assembly. This is a process of putting together a thing. Alright, and that's it for English meaning. Now I'm going to give you Urdu meaning. If you want to stay for that, please do. If not, that's it for you. Bye! Alright guys, assembly जो है ये एक नाउन है जिसके दो मीनिंग हैं, दो मायने हैं. पहला है मजलिस दस्तूर साज. रोज़ाना दस्तूर के हिसाब से एक मजलिस लगे किसी एक मकसद के लिए, जैसे कि हमारी स्कूल असेंबली होती थी जो अकॉर्डिंग टू मी बच्चों को टॉर्चर करने के लिए होती थी, बट दैट्स नॉट द पॉइंट. असेंबली, राइट? उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है कि ये एक तरीका है चीज़ों को बनाने का. क्या है? प्रोसेस है जिसमें पार्ट्स एक चीज़ के जोड़ के एक पूरी चीज़ बनाई जाती है. एग्जाम्पल देती हूँ. टूथपेस्ट की असेंबली क्या होगी, प्रोसेस क्या होगा कि मे बी एक बंदे ने ट्यूब उठाई और उसको सील किया नीचे से, और उसके बाद दूसरे बंदे ने उसके अंदर टूथपेस्ट डाला, उसके बाद तीसरे बंदे ने उसके ऊपर कैप डाला, राइट, उसको बंद किया, फिर चौथे ने उसको पैक किया. तो ये पूरी चीज़ क्या है? ये एक असेंबली बन गई, एक प्रोसेस बन गया कि एक चीज़ के पार्ट्स हैं उनको लगा के एंड में एक प्रॉपर टूथपेस्ट ट्यूब निकलती है पैक हुई हुई. ठीक है? एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई रियली होप आपको वीडियो अच्छी लगी. अगर लगी तो गिव इट अ थम्स अप. You can support me by buying me a coffee. Link is in the description box. Bye.